Which article deal with impeachment process? Article 61 establishes the quasi-judicial process for impeachment. Require a supermajority, two-thirds of total member of both houses. Who can initiate the motion of impeachment? Either of the houses, मतलब कोई भी हो, both houses of parliament, either Lok Sabha or Rajya Sabha can initiate the impeachment process. Only MPs can participate. State legislature do not take part. सिर्फ MP पार्ट ले सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं इम्पीचमेंट प्रोसेस में. लोकसभा राज्यसभा आल्सो हैज़ द पावर. राज्यसभा लोकसभा हैज़ आल्सो द पावर. Speaker does not initiate the motion, MPs do. If an impeachment motion is introduced, it can begin in either house of the parliament. On what grounds can the president be impeached? Impeached constitutional violation of constitution. The two houses of parliament, Article 61. The president can only be impeached by parliament for violation of the constitution. Chief Justice of India, Supreme can review but not initiate impeachment. Vice President, no role of impeachment initiation. Minimum notice period before impeachment motion 14 दिन. Impeachment requires a written notice of at least 14 days signed by 1/4 of total members of initiating house. Who is in electoral college but not in the impeachment process? तो विधानसभा के जो मेंबर हैं इलेक्टेड मेंबर्स को. इलेक्टोरल कॉलेजेस ऑफ इलेक्शन आर्टिकल 54 इंक्लूड इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा राज्यसभा, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. 17th अमेंडमेंट 1992 के बाद impeachment process आर्टिकल 61 इंक्लूड ओनली एमपीज. स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स नहीं पार्ट होते हैं. इन 2022 Rajasthan MLAs voted for Draupadi Murmu but had no role in impeachment process. What is the nature of impeachment process? Quasi-judicial है. The process involves an investigation and trial-like procedure in parliament. Parliament में investigation और trial-like procedure चलेगा. Not a purely legislative or executive decision. MPs debate and examine charges. एमपी जो है वो डिबेट करेंगे और एग्जामिन करेंगे चार्जेस का. क्वेसी जुडिशियल. एक्सिक्यूटिव प्रोसीजर. एक्सिक्यूटिव गवर्नमेंट हैज़ नो रोल इन इम्पीचमेंट. जुडिशियल प्रोसीजर. सुप्रीम कोर्ट डज नॉट कंडक्ट इम्पीचमेंट. पार्लियामेंट डज. लेजिस्लेटिव प्रोसीजर. इट इज़ ए क्वेसी जुडिशियल रिक्वायरिंग ए ट्रायल लाइक प्रोसेस. इन द यूएस द प्रेसिडेंट्स इम्पीचमेंट प्रोसेस इज आल्सो क्वेसी जुडिशियल रिक्वायरिंग ए ट्रायल इन द सीनेट. मतलब क्वेसी जुडिशियल मतलब ट्रायल लाइक वो होगा. आर्टिकल 52 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस. 53 एक्सिक्यूटिव पावर को बताता है. 54 इलेक्टोरल कॉलेजेस फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. 55 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. 56 टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट 5 year. 57 नो लिमिट ऑन प्रेसिडेंशियल री इलेक्शन. 61 impeachment process of the president. 62 election must be held before term expiry. 71 Supreme Court decide presidential election disputes. Time frame to fill the vacancy of president कितने दिनों में? 6 month में. Article 62(2) of the Indian Constitution mandate that a vacant presidential post must be filled within 6 months from the date of vacancy. The vacancy may occur due to death, resignation, removal or any other reason. ठीक. 90 days too short है. 9 month नहीं. Exceed the constitutional limits of 6 months. 1 year unconstitutional. The post cannot be vacant more than 6 months. After the sudden death of President Zakir Hussain in 1969, President V.V. Giri served as acting president and elections were conducted within 6 months. Deadline for conducting presidential election after vacancy within 6 months of the occurrence of vacancy. Article 62 to ensure that highest constitutional office in India never remains vacant beyond 6 months. 1 year exceeds the constitutional limit. Dr. Shankar Dayal Sharma, 1992 to 1997, completed his term and elections were held on time. Deadline to fill presidential vacancy 6 months.
Article 62 provides that a new president must be elected within 6 months if the office becomes vacant. V.V. Giri acted as the president from May to August 1969 after Zakir Hussein's death, and new elections were conducted within 6 months. During which of the vice president can act as president? During of which the president can act as the vice president can act as president 6 months. Article 65(1). The vice president act as president when position is vacant but can't continue beyond 6 months. 6 महीने के बाद वो नहीं वो कर सकते. Within this period a new president must be elected. हाँ. V.V. Giri acted as a president for 3 months in 1969 after Zakir Hussain death, but resigned to contest the election. Justice Muhammad Hidayatullah, Chief Justice, then served as acting president until the election. मतलब V.V. गिरी जी जो थे उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, तो 3 महीने के भीतर ही चुनाव, मतलब 6 महीने के भीतर चुनाव होने थे, तो 3 महीने के बाद उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और क्या किया, प्रेसिडेंट के का चुनाव लड़ गया. Who became acting president in case of vacancy? Vice president. 65(1). Article 65(1) specifies that if president's office falls vacant, the vice president acts as president until the new president is elected. Prime Minister has no constitutional role in succession. Chief Minister CGI acts as only if both the president and vice president are unavailable. Chief Justice of India. Who acts as the president if both president and vice president are absent? Chief Justice of Supreme Court. The President Discharge Function Act 1969 states that if both president and vice president are absent, Chief Justice of India will act as president. If the CGI, Chief Justice of India, is unavailable, the senior most judge of Supreme Court acts as president. In 1969, Chief Justice Muhammad Hidayatullah served as acting president when both the president and vice president position were vacant. अब देखिए जाकिर हुसैन जी की डेथ हुई, तो उस डेथ के बाद क्या हुआ, V.V. गिरी जी वाइस प्रेसिडेंट बने. फिर 3 महीने बाद चुनाव होने थे, मतलब 6 महीने के अंदर, तो उन्होंने रिजाइन किया, तो जस्टिस हिदायतुल्ला जी एक्टिंग प्रेसिडेंट बने. ठीक, तो फिर चुनाव हुआ, V.V. गिरी जी चुन के हैं. Who discharge the president's function if both president and vice president are absent? To Chief Justice of India. The President Discharge of Function Act 1969 specifies that CGI takes over role in case both the president and vice president are absent. ठीक, if both president and vice president are vacant, who officiates? Chief Justice of India. If both president and vice president are vacant, who officiates? Chief Justice of India. Article 65(1). Vice President takes over if the President's office is vacant. If both offices are vacant, the Chief Justice of India acts as President. Article 65(1). Prime Minister, PM has no constitutional role. Speaker का भी नहीं है. CGI is the correct answer. Justice Muhammad Hidayatullah acted as President in 1969 when both the President and Vice President posts were vacant. Article 52. Establishment of President's Office. Article 54. Electoral College for Presidential Elections. Article 55. Proportional representation and single transferable vote system. Article 56. Terms of the President 5 years. 57. No limits on the presidential re-elections. Article 61. Impeachment process of the President. Article 62. Election must be held before term expiry. Article 65. Vice President acts as President in case of vacancy. Who temporarily holds the office if both the President and Vice President positions are vacant? Chief Justice of Supreme Court. If Article 65(1), if both the President and Vice President office are vacant, Chief Justice of India acts as President until new elections are held.
This is further clarified in the President Discharge of Function Act 1969. If the CGI is unavailable, the senior most judge of the Supreme Court assumes the role. Justice Muhammad Hidayatullah serving as acting president in 1969 when both the president and vice president's office were vacant. Can the president be subjected to litigation? मतलब लिटिगेशन के लिए हाँ, अब देखिए 361 में क्या है, जब तक नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, जब तक वो ऑफिस में है तब तक वो नहीं किया जा सकता. लेकिन 361(4) क्या कहता है, सिविल केस कैन बी इनिशिएटेड आफ्टर 2 months ऑफ गिवन रिटन नोटिस. मतलब 2 महीने की रिटन नोटिस देने के बाद एक सिविल केस क्या किया जा सकता है, फाइल किया जा सकता है. एजर्सन नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड ड्यूरिंग ऑफिस सही है. द प्रेसिडेंट इज नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल केसेस कैन बी फाइल्ड आफ्टर नोटिस. ठीक, नोटिस के बाद तो वो किया ही जा सकता है. ए सिविल केस कैन बी इनिशिएटेड आफ्टर 2 months ऑफ गिविंग रिटन नोटिस. तो ये दोनों एक दूसरे में आपस में टकरा रहे हैं. हु रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट. यूनियन कैबिनेट वो करती है. आर्टिकल 85(2)(b), प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा but only on the advice of Union Council of Ministers headed by PM. This means President can't dissolve the Lok Sabha unilaterally. खुद से नहीं कर सकते हैं जब तक वो ना आ जाए, रिकमेंडेशन नहीं आ जाए. चीफ जस्टिस के रिकमेंडेशन से नहीं, लोकसभा के भी रिकमेंडेशन से नहीं, क्योंकि लोकसभा डज नॉट रिकमेंड इट्स ऑन डिसोल्यूशन. राज्यसभा रिकमेंडेशन, नो रोल इन लोकसभा. In 2019, Lok Sabha was dissolved before election on the advice of Union Cabinet. Who summons a joint sitting of parliament? President बुलाते हैं. आर्टिकल 108, President summons a joint sitting of both houses of parliament when a bill is rejected by the other house, both houses disagree on amendments, more than 6 months elapse without a decision. Speaker of Lok Sabha presides over a joint meeting. आर्टिकल 118(4) का. Speaker of Lok Sabha presides over the session. Parliament can't summon itself for a joint. Chairman of Lok Sabha has no power to summon joint sitting. In 2002, joint session was summoned by President for prevention of 2002 में a joint session was summoned by the President for the Prevention of Terrorism Act bill, POTA bill. Who can call a joint session of Parliament? President. The President alone has the power to summon a joint session on specific legislative deadlocks. ठीक. What expression is used regarding the President message for a joint sitting? Intention of the President. Article 108, President notifies the houses of his intention. Notifies the houses of his intention to summon a joint sitting. Direction of the President नहीं. President does not direct Parliament but intends to call a session. Wisdom of the President. Wisdom is not a constitutional term in this context. Consent is not required. It is constitutional duty. तो जैसे डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट बिल हुआ था, was resolved through a joint sitting summoned by President. ठीक है. Article 52, Establishment of President's Office. 53, Executive Power of President. Article 54, Electoral College. 55 मतलब ये होता है चुनाव को लेकर, प्रोपोर्शनल और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. 56, टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट 5 years. 57, नो लिमिट ऑन प्रेसिडेंशियल री इलेक्शन. 61, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 62, election must be held within 6 months if the position becomes vacant. Article 65, Vice President act as President in case of vacancy. Article 85, dissolution of Lok Sabha and Cabinet's recommendation. Article 100, President can summon a joint session of Parliament in case of legislative deadlock. What is required under Article 108 to summon a
joint sitting, intention of the president. Article 108 provides for a joint sitting of both houses in case of legislative deadlock. ठीक, the president notifies both houses of his intention to summon a joint session. Condition of joint sitting: if a bill is rejected by other house. कंडीशन क्या होता है? अगर बिल रिजेक्ट हो जा रहा है अदर हाउस, इफ द हाउस फेल्स टू एग्री ऑन अमेंडमेंट्स, इफ मोर देन 6 months elapse विदाउट ए डिसीजन. तीन मतलब वो है, अगर बिल रिजेक्ट हो जा रहा है किसी हाउस से, या अगर हाउस डिसएग्री है अमेंडमेंट पे, या 6 महीने बीत चुके हैं विदाउट डिसीजन. Satisfaction: the president's satisfaction is not constitutional requirement. Instruction of president does not instruct, he only express his intention. Consent is not required, it is constitutional duty. In 2002 a joint session was called for the Prevention of Terrorism Act पोटा बिल. ठीक है, इनकरेक्ट. अच्छा, ही पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑफ बोथ हाउसेस. नहीं, मतलब Article 79, the president is a constituent part of the parliament along with Lok Sabha and Rajya Sabha. Article 86, president does not participate in debates or discussions. हाँ, ये बस किसी बिल का मामला फंस जा रहा है तो, या संबोधन देने जा रहे हैं, कोई चुनाव हुआ तो उसके पहले सेशन में या हर साल के पहले उसमें प्रेसिडेंट जो है संबोधित करेंगे. ही इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, सही, एज पर आर्टिकल 79. ही एड्रेसेस द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज एवरी ईयर, सही है, आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग. ही कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेज इन सर्टन सिचुएशन, बिल्कुल सही, आर्टिकल 1, 2, 3 के दौरान के थ्रू. ठीक, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, सही है, आर्टिकल 79. हाँ, आर्टिकल 111, ए बिल कांट बिकम ए लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट एसेंट, सही है. The president is a part of parliament. The president assent is necessary for a bill to become law. When does a bill become law? When the president has given his assent. Article 111. After being passed by both houses, a bill requires the president assent to become law. It is passed by both houses. Passing does not automatically make it a law. It requires president's assent. Prime Minister has signed it. नहीं, President. The Supreme Court has declared to be within Parliament's competence. The Supreme Court does not approve laws. It only interprets them when challenged. Judicial review. The Forms Law 2020 become act only after receiving President's assent. आर्टिकल 111, प्रेसिडेंट जब तक असेंट नहीं देंगे तब तक वो लॉ नहीं बनेगा. When does a bill become an act? When the president has given his assent. ठीक, अरे ये तो हो गया था. आर्टिकल 79, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, क्या क्या है? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा. आर्टिकल 79 हम लोग को बताता है. आर्टिकल 86, प्रेसिडेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, या मतलब डिस्कशन, वो मतलब जॉइंट सेशन बुलाते हैं, या साल के मतलब चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है उसमें संबोधित करते हैं, या साल की पहली बैठक को संबोधित करते हैं, अपने इंटेंशंस बताते हैं वो. ठीक, प्रेसिडेंट एड्रेसेस पार्लियामेंट एवरीवेयर, एवरी ईयर, आर्टिकल 87. आर्टिकल 108, प्रेसिडेंट समन्स ए जॉइंट सेशन इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव डेडलॉक. अगर 6 महीने से कोई बिल नहीं पास हो रहा है, या कोई अमेंडमेंट करना, हाउस एग्री नहीं है, या दूसरा हाउस पास नहीं कर रहा है, तो बुलाते हैं. आर्टिकल 111, ए बिल बिकम्स ए लॉ ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट्स असेंट. आर्टिकल 123, प्रेसिडेंट कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. और ऑर्डिनेंस मतलब 6 वीक के अंदर उसको क्या करना होता है, पार्लियामेंट को ऑर्डर देना होता है, तब वो जाके लॉ बनता है. व्हेन डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज वीटो पावर? कब इन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था? द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट अमेंडमेंट बिल के दौरान. टाइप ऑफ वीटो पावर कौन कौन सा होता है? टाइप्स ऑफ वीटो पावर. एब्सोल्यूट वीटो, प्रेसिडेंट रिफ्यूजेज टू साइन ए बिल एंड इट डज नॉट बिकम लॉ, वो एब्सोल्यूट वीटो होता है. सस्पेंसिव वीटो, द प्रेसिडेंट returns the bill for reconsideration and parliament must repass it with or without amendments.
ठीक, मतलब एब्सोल्यूट में मना कर देते हैं साइन करने से, सस्पेंसिव में ये कहते हैं फिर से वापस भेजते हैं कि आप फिर से इस पे विचार कीजिए। पॉकेट वीटो में क्या होता है, द प्रेसिडेंट टेक्स नो एक्शन ऑन द बिल इंडेफिनेटली। ठीक, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद अप्लाइड एन एब्सोल्यूट वीटो ओवर पेप्सू एप्रोसिएशन बिल 1954 और प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह एक्सरसाइज पॉकेट वीटो इन 1986 ओवर इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। Okay, who used the pocket veto? Gyani Jail Singh ji. Definition of pocket veto: the president takes no action on bill, preventing it from becoming law indefinitely. This is different from absolute veto, which outright rejects the bill. Gyani Jail Singh used pocket veto to withhold assent to the Indian Post Office Amendment Bill, which proposed granting the government extensive power to intercept postal communication. Under which article can the president withhold assent? Article 111. When a bill is passed by both houses of the parliament, the president may either assent it or withhold assent. Article 63 deals with the office of vice president. Article 108 deals with joint sitting of the parliament. Article 109 relates to money bills. Article 109 क्या करता है, रिलेट करता है मनी बिल से। Who has the power to withhold assent? President. Only the president has the constitutional authority under Article 111 or to give or withhold assent to a bill. ठीक है, अच्छा ये देखिए, डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट क्या क्या हैं। टू रिटर्न ए बिल विद ऑब्जेक्शन, द प्रेसिडेंट कैन सेंड ए बिल back for reconsideration. To withhold a bill, president can reject a bill outright, absolute veto. To send message to the parliament, under article 86(2) the president can send message regarding pending bills. ठीक, नॉन डिस्क्रिशनरी पावर या एग्जीक्यूटिव पावर कह देते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, मिनिस्टर, समनिंग जॉइंट सेशंस आर नॉट डिस्क्रिशनरी एज दे रिक्वायर प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस। लेकिन इसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस नहीं लगेगी। टू रिटर्न ए बिल विथ ऑब्जेक्शन, टू विथ होल्ड ए बिल और टू सेंड मैसेज टू पार्लियामेंट। When is the president not bounded by the council of ministers to assent the bills? Article 111. The president is not bound by the council of ministers while deciding on bills assent. Other cases where president acts on advice: appointment of ambassador requires PM's approval, assent of bills referred by governors done after consulting union government। अच्छा, जो बिल गवर्नर्स द्वारा मतलब भेजा गया है उस पर यूनियन गवर्नमेंट की राय लेनी पड़ेगी। डिसॉल्विंग लोकसभा डन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ PM एंड कैबिनेट, आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग। असेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, आर्टिकल 368। आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट कैन असेंट, रिटर्न और विथहोल्ड बिल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मतलब वो करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी लॉज। आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट कैन असेंट, रिटर्न और विथहोल्ड बिल्स। आर्टिकल 86(2) प्रेसिडेंट कैन सेंड मैसेजेस टू पार्लियामेंट, आर्टिकल 86(2). हाँ, आर्टिकल 108 प्रेसिडेंट कैन समन ए जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये हम लोग का ख़त्म होता है, बाकी अगले पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय।